हाय बच्चों, वेलकम टू बोनो फिजिक्स क्लासेस। बोनो फिजिक्स क्लासेस का स्टार्ट है। टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। इसमें 99.9% क्वेश्चन मिलते हैं चार क्लासेस में, नहीं तो 1% थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लैब में मिलते हैं। 4 मार्क्स जेब में लगो आके चलो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। इसमें फर्स्ट वन आइसोबैरिक प्रोसेस। इन द आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर P and number of moles of the gas are constant and volume comma T are changes हो जाते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to n0 लिखना पड़ता है बेटा, लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस P कांस्टेंट है, V इज इक्वल क्या हो जाता है, n0 by P हो जाता है। दैट इज V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है बेटा, राइट। where nr by P is called slope of the process. It is denoted by m is equal to or tan theta is equal to nr by P है बेटा, that is for theta हो जाता है for smaller values, theta is inverse proportional to P हो जाता है बेटा। when we have drawn the graph between V and T क्या मिलता है, तो V है और T है, V is direct proportional to T है बेटा इधर, ओके। the shape of the graph is straight line ऐसा हो जाता है, which is passing through the origin because of V is direct proportional to T। and PV को ग्राफ लिखो बेटा क्या हो जाता है, pressure P take on y axis and V, which is gives what is that a straight line perpendicular to P। और P and T ग्राफ लिखो, P and T ग्राफ क्या हो जाता है बेटा, वो भी straight line perpendicular to P। next the amount of work done in this process is given by W is equal to integration of P dV हो जाता है बेटा V1 to V2, that is W is equal to P into delta V, that is equal to NR into delta T। this is the work done in this process, लिखो बेटा, ओके बेटा। सेकंड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस में वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है बेटा। प्रेशर इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट इज द PV is equal to N RT। so from this P is equal to N RT by D हो जाता है बेटा। P is direct proportional to T है इधर, where nr by V is equal to slope of the process है बेटा, slope of the process है, which is denoted by m is equal to a tan theta is equal to nr by V, nr by V हो जाता है। for small values theta is equal to nr by V, from this theta is inverse proportional to V है, inverse proportional to V हो जाता है। theta 1 upon theta 2 is equal to V2 upon V1 हो जाता है, ओके। when a graph we have drawn between P and T, the graph between P and T which is gives a straight line passing through the origin because of P is direct proportional to T है बेटा, P is direct proportional to T है। और PV को ड्रॉप करो क्या मिलता है बेटा, PV को ग्राफ क्या मिल जाएगा, इधर V कांस्टेंट है, जैसे भी चीज पैरेलल टू P मिलते हैं बेटा और परपेंडिकुलर टू V। और VT को ग्राफ लिखो बेटा, VT को ग्राफ क्या मिलते हैं इसमें, VT का ग्राफ V ऐसे लो, T ऐसे लो, VT का ग्राफ क्या मिलता है बेटा, विच इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम। in this the amount of work done क्या होता है बेटा, the amount of work done क्या हो जाता है, work done
In this process W is equal to integration of PdV V1 to V2 ठीक है बेटा, बट V is equal to constant है, that is plus dV is equal to 0 हो जाता है बेटा, that is W isobaric is equal to W isobaric क्या हो जाता है बेटा, वर्क डन 0 हो जाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं मिलता बेटा, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक है, लिखो बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है बेटा, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस आर कांस्टेंट है बेटा। इसमें देखो बेटा Pv इज इक्वल टू n RT है, ठीक है, P इज इक्वल टू n RT by V हो जाता है बेटा, ठीक है, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। When we have drawn the graph between P and V, which is gives what is that? When we have drawn the graph across P and V, which is gives what is that better? The shape of the graph is a rectangular hyperbola हो जाता है बेटा, ऐसा rectangular hyperbola हो जाता है। इसको क्या लिखो हम देखो, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, PdV plus VdP is equal to nR into dt, और dt कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है बेटा, दैट इज इक्वल टू PdV is equal to minus VdP हो जाता है बेटा, राइट, PdV minus VdP, dP upon dV is equal to dP upon dV is equal to minus P by V, dP upon dV is equal to क्या हो जाता है बेटा, bulk mass by volume, already what is the bulk mass B is equal to minus dP into V by delta V, dV is already known from the definition of the bulk mass, so dP by dV is equal क्या हो गया बेटा, V by V हो जाता है, that is equal V by V is equal to P by V है, V खत्म हो जाता है, the bulk mass is equal to the pressure of the gas बराबर हो जाता है। But the reciprocal of the bulk mass is called as the compressibility. The compressibility of the gas is given by K is equal to 1 by B. 1 by B is equal क्या हो जाता है बेटा, इसको 1 by P हो जाता है। Compressibility inversely proportional to pressure of the gas. When we have drawn across K and 1 by P, which is gives a straight line, which is gives straight line. So the amount of work done in this process is given by W is equal to integration of PdV is already known, but PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, P is equal to nRT by V, that is W is equal to integration of nRT by V into dV हो जाता है बेटा, with respect of volumes V1 and V2, nRT बाहर आओ, W is equal to क्या हो जाता है बेटा, 2.303 nRT log 10 V2 upon V1 base 10 हो जाता है बेटा, और W is equal to 2.303 nRT log P1 by P2 base 10 हो जाता है। This is the amount of work done in the isothermal process, ठीक है, लिखो बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q and S एंट्रोपी और कांस्टेंट है। द प्रोसेस obeys PV to the power of gamma is equal to कांस्टेंट हो जाता है, फिर गामा इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट गैस कांस्टेंट है बेटा, PV to the power of gamma is equal to constant है। The internal energy in the adiabatic process is given by du is equal to क्या हो जाता है बेटा, du is equal क्या हो जाता है, du is equal to n
dt, NCV dt, that is equal to P2 V2 minus P1 V1 by गामा माइनस 1 है बेटा। इसको दो तरफ रिलेशन से क्या बेटा, TV to the power of gamma minus 1 is equal to constant, that is T1 V1 power of gamma minus 1 is equal to T2 V to the power of gamma minus 1 है, gamma 1 gamma 2 देखो, और P power of 1 minus gamma into P power of gamma is equal to constant, और P into V power of gamma by gamma minus 1 is equal to constant हो जाता है बेटा, that is P1 V1 power of gamma by gamma minus 1 of the first process is equal to P2 V2 power of gamma by gamma minus 1 of the second process. Okay, लिखो बेटा। Okay बेटा, next process of polytropic process, the process which obeys PV to the power of A is equal to constant is called as a polytropic process, where A may be positive or negative, or A may be fraction, it may be any fraction or integer, कोई भी नंबर हो सकती है, ठीक है। इसमें the amount of work done is given by W is equal to NR dt upon 1 minus A, और W is equal to P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus हो सकते बेटा। इसमें स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट C is equal to R by 1 minus gamma plus R by 1 minus A is a स्पेसिफिक हीट हो जाता है बेटा। इसमें स्लोप क्या हो जाता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन dP by dV is equal to minus A into P by V हो सकता है बेटा, ठीक है। The shape of the graph कैसा, PV shape of the graph कैसा रहता है बेटा, this is the pressure P is take on y-axis, V is take on x-axis. When we have drawn the graph, the slope may be positive or negative हो सकते हैं ऐसे। इसमें any tangent is drawn which is used, what is the slope of the graph, where this is a decrease हो रहा है, negative हो सकते हैं, PV to the power of plus C हो जाता है, इसका PV to the power of minus A हो सकता है बेटा। Any tangent is drawn like this, which is gives the M is positive slope, because it is increasing order, it is a decreasing order, लिखो बेटा। ओके बेटा, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज सो प्रोसेस का वहाँ पे है बेटा। इसमें कौन सा प्रोसेस में निकला हुआ था देखो इधर, PV to the power of A is equal to constant है, if A is equal to 0, if A is equal to 0 लगा बेटा, P to V power of 0 is equal to constant, that is called P is equal to constant. If P is equal to constant, this process is called as isobaric process, isobaric process हो जाता है बेटा। नेक्स्ट वो कैसे लिखते हम देखो, P power of 1 by A into V is equal to constant है बेटा, वही पे ऐसा लिखेंगे। If A is equal to infinity है बेटा, P power of 1 by infinity into V is equal to constant, P power of 1 by infinity क्या हो जाता है बेटा, P power of 0 into V is equal to constant. So from this it is very clear that V is equal to constant. V is equal to constant means this process is called as isochoric process. Isochoric process हो जाता है बेटा। और देखो PV to the power of A is equal to constant है, if A is equal to 1 होगा बेटा, PV is equal to constant है, that is P is inverse proportional to 1 by V है ना, P is inverse proportional to 1 by V. This process is called as
isothermal process. isothermal isothermal process है बेटा. Suppose PV to the power of A is equal to constant में A is equal to 1 लगाओ और A is equal to gamma लगाओ. A is equal to gamma लगाओ. That is PV to the power of gamma is equal to constant है बेटा. What is this process? This process is called adiabatic process. Adiabatic process. Therefore, वो polytropic process में कौन सा process भी निकालना पड़ सकता है. देखो if A is equal to 0 लगाओ isothermic मिल गया. इसमें A is equal to infinity लगाओ isochoric मिल गया. If A is equal to 1 लगाओ isothermal मिल गया. If A is equal to gamma लगाओ adiabatic मिल गया. वो सोप का प्रोसेस का बाप है बेटा, वो याद रखना पड़ता है. इसमें कंपल्सरी क्वेश्चन मिलते हैं. ठीक है, लिखो बेटा. The first law of thermodynamics states that the amount of heat supplied to a system delta Q can be utilized in two ways. First one is to increase internal energy and external work done by the gas. That is delta Q is equal to delta U plus delta W, or dQ is equal to du plus TW. This also I am writing du plus PdV, or dQ is equal to du plus integration of PdV from V1 to V2. This is called as the first of thermodynamics. Some sign conventions are there. What are the sign conventions? See, delta Q given to the system is taken as positive. Delta Q taken from the system is taken as negative. Increase in internal energy is taken as positive. Decrease in internal energy is taken as negative. Work done by the expansion of gas taken as positive. Work done by the external gas or expansion of the gas. For expansion of gas, delta W work done is taken as positive. For compression of gas, delta W is taken as negative. These are the sign conventions. You should remember it. Okay, देखो बेटा. ओके बेटा, 2024 में एक क्वेश्चन पूछे और बहुत आसान प्रॉब्लम है. क्या दिया देखो इधर. द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रियल गैस ओवन PV स्क्वायर इज इक्वल टू RT. इसका इक्वेशन लिखना पड़ता है. क्या इक्वेशन हो जाता है इधर देखो. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dQ इज इक्वल टू du प्लस dW है ना बेटा. ठीक है, du इसको क्या हो जाता है Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस dW इसको pdV हो जाता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले. But the given equation was PV square is equal to RT beta. Differentiate on both sides. P into 2V dV is equal to R into dt हो जाता है बेटा. इसमें P dV is equal क्या हो जाता है R dt by 2V हो जाता है बेटा. ठीक है, let's take this equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में लगाओ. क्या मिलता है देखो इधर. Cp dt is equal to Cv dt plus
ईडीटी मीन्स क्या क्या बेटा आर डी बाई और डी टी बाई टू भी हो जाता है ऑन बोथ साइड्स। डी टी कैंसिल करो, सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर अपन टू बी है बेटा। बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम हो जाए। सोचो तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, 4 नंबर लेके, ठीक है। देखो बेटा और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, और 2020 जेई में पूछे ए सोर्स सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट अ रेट ऑफ dq by dt इज पर कितने दे बेटा 1000 वाट्स दिए। इफ द सिस्टम सप्लाइज ए वर्क एट अ रेट ऑफ d double by dt दिए बेटा दैट इज इक्वल टू 200 वाट्स दिए। क्या निकालना पड़ता है? The rate at which the internal energy of the system increases, internal energy कितने increase हो जाते हैं वो निकालना पड़ता है। According to the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, what is better? dq is equal to क्या लिखना पड़ेगा? dq is equal to du plus dw, नीचे dt से मल्टीप्लाई करो, dt इज इक्वल टू dt बाई dt हो जाता है। du बाई dt निकालना पड़ता है, du बाई dt इसको क्या हो जाता है बेटा du बाई dt माइनस dw बाई dt हो जाता है। dq बाई dt दिए बेटा, dq बाई dt कितने दिए 1000 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 800 वाट्स है बेटा। और 2023 में पूछे बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है लिखो बेटा। ओके बेटा और एक प्रॉब्लम देखो, द प्रेशर ऑफ ए गैस चेंज लीनियरली विद द वॉल्यूम ए टू बी as shown in the figure diagram. If no heat is supplied or extracted from the gas, then change in the internal energy of the gas will be how much? So change in internal energy निकालना पड़ता है बेटा इसमें, ठीक है। no heat is supplied, no heat is supplied, that means delta Q is equal to dq is equal to 0 हो गया, वो काम ही हो गया। and extracted from the gas, then the change in internal energy of the gas will be how much? वो भी निकालो फर्स्ट वर्क निकालो बेटा। W इज क्या हो जाता है बेटा, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ है ना, एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाता है बेटा ऑफ इनटू a प्लस b इनटू h हो जाता है बेटा, वो a वो b है, दैट इज W इज इक्वल टू ऑफ इनटू 50 प्लस 10 इनटू वो किलो पास्कल में दी, दैट इज 10 टू द पावर 3 पास्कल में हो जाता है 10 टू द पावर 3 इनटू h पे h हो जाता है बेटा। इसका डिफरेंट कितना है बेटा, बोलो इसका डिफरेंट कितना है 200 माइनस 50 इक्वल 150 इनटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करो ऐसा, दैट इज 150 इनटू 10 टू द पावर -6 हो जाए, ठीक है। W इज क्या हो जाता है ऑफ इनटू 60 इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू 150 इनटू 10 टू द पावर -6 हो गया बेटा, 10 टू द पावर 3 4 5 वो खत्म हो गया 10 टू द पावर -6 और इधर 10 टू द पावर -1 हो गया, बच गए 2 1 2 3 दैट इज W इज इक्वल टू 350 45 into 10 to the power of -1 that is 4.5 जूल हो गया। दिस वर्क डन है बेटा, क्या निकालना पड़ता है इसमें इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ता है। dq इज क्या है बेटा du प्लस dw है ना, ठीक है dw है ना, वो वर्क डिक्रीज हो रहा है 200 से 50 चल गया, दैट्स इट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने का वर्क क्या लेते हैं बेटा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है वो 0 हो गया, दैट इज फॉर du इज फॉर क्या हो गया बेटा dw दैट इज इक्वल टू 4.5 जूल। आ जाना है बोलो, नहीं बोल रहा कोई बच्चा नहीं बोल रहा, देखना पड़ता है ना, ऐसा सोच के करना पड़ता है, ठीक है करो बेटा। ओके बेटा देखो और एक प्रॉब्लम दी है, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गामा इज इक्वल टू 1.5 है, गामा इज इक्वल
change adiabatically from 5 liters to P1 is equal to 5 liters दिए बेटा और V2 is equal to 4 liters दिए 4 liters दिए. The ratio of the initial pressure to final pressure, initial pressure to final pressure निकालना पड़ता है. कैसा निकालना पड़ता है बोलो बेटा बोलो. जो चल जाओ adiabatic equation. What is adiabatic equation? PV to the power of gamma is equal to constant है ना. P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 whole power gamma है ना बेटा. V2 वैल्यू कितने दिए 4/5 whole power of 1.5, that is 15/10 ले लो. That is for 4/5 क्या हो जाता है बेटा 3/2 हो जाता है. 5 3 5 2 इसको क्या ले लो 4/5 into root over 4/5 है बेटा. ठीक है. P1 upon P2 इसको क्या हो जाता है देखो 4/5 into 2/5, that is for 8 upon 5/5. बहुत आसान है ना बेटा. देखो चलो लिखो. ओके देखो ओके बेटा. और एक प्रॉब्लम दिए वो भी कैसा करना सोचो एक बार कैसा करना पड़ता है. कैसा करना पड़ता है देखो बेटा. इधर एक डायग्राम दिए. A real gas with a coarse charmer at 27 in the same degree temperature, T is equal to 27 273 is equal to 300 Kelvin per year, and undergoes the cyclic process I showed in the figure diagram here, which is obeying what is that PV cube is equal to RDA beta. From this P is equal क्या हो जाता है V power minus 3 into RT. This obeys this relation. Okay. The path A to B, the next work done in the complete cycle is equal to the total work done in the cycle is equal to कितने वो निकालना होता है. इसमें देखो बेटा वो CA में CA is a perpendicular of P. The work done by the CA is equal क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है because of V is equal to constant, delta V is equal to 0, dW is equal to PdV, वो भी 0 हो जाता है. इसका जरूरत भी नहीं है वर्क निकालने के लिए. और इधर देखो फ्रॉम B to C में द वर्क डन इज क्या हो जाता है बेटा BC इज इक्वल PdV है. प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ओवर है, दैट इज इक्वल टू P कितना बेटा 10 into dV. What is that 2 minus 4 is equal to minus 2 है बेटा. That is for WBC is equal कितने हो गए minus 20 joules हो गए because of the volume is decreased from 4 meter cube to 2 meter cube. That's what we have got. The work done is negative. Next A to C, sorry A to B देखो this isothermal process है. The gas volume changes from 2 to 4 ऐसा. So isothermal process में work done W of AC is equal क्या हो जाता है बेटा देखो integration of P dV between the limits of 2 to 4. But P value is already know. What is the P value? Integration of 2 to 4 minus V cube into RTA बेटा. ठीक है into dV हो गया. इसको क्या लिख रहा हूँ minus RT by V minus RT by 2 into 1 by V square between the limits of 2 to 4. इसको क्या मिल रहा है देखो W of AC is equal to minus RT upon 2 into 1 by 16 minus 1 by 4 है बेटा. That is W of AC is equal क्या हो गया minus RT by 2 वो क्या हो गया बेटा 16 LCM हो गया 16 1 minus 4 हो गए minus 3 हो गए. इसका W of AC is equal क्या हो गया बेटा that is equal to 3 RT upon 32. That is W of AC is equal to 3 into R value 8 into 300 upon 32. That is equal to 2 into 16 divided
2 into 16 है T है 8 1 जा 8 2 जा 16 है 2 1 जा 2 150 जा 300 हो गया अगेन 2 1 जा 275 जा 150 हो गया बेटा 375 से क्या हो गया बेटा 3 into 75 425 है ना that is double of AC is equal to 425 joules हो गया ओके पूरा वर्क कितना हो गया इधर W net is equal क्या होगा बेटा W net is equal to 425 minus 20 joules आ गया ना इधर minus 20 joules that is equal to 205 joules है बेटा बहुत आसान प्रॉब्लम है ऐसा सोच के करना पड़ता है ठीक है लिखो बेटा और एक प्रॉब्लम और 2024 में पूछे बेटा a diatomic gas gamma is equal to does 100 joules of work in an isobaric expansion the heat given to the system is equal to how much heat निकालना पड़ता है इसमें क्या दिया बेटा वर्क डन आइसोबैरिक में W इज इक्वल टू PdV इज इक्वल टू NR dt है दैट इज इक्वल टू 100 जूल दिया बेटा डायटोमिक गैस का डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है द हीट गिवन टू द गैस इज इक्वल हाउ मच अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फॉर्मूला dQ इज इक्वल टू du प्लस dW दैट इज dQ इज इक्वल टू du मींस क्या बेटा FNR dt upon 2 plus dW value is NR dt है बेटा that is dQ is equal to F by 2 plus 1 into NR dt but NR dt value was already 100 joules F value was already this दो values इसमें सब्स्टिट्यूट करो 5 upon 2 plus 1 into 100 कितना हो जाता है बेटा 7 by 2 into 100 okay that is equal to this is the 50 that is equal to 350 joules बहुत आसान प्रॉब्लम है 2020 में पूछा लिखो बेटा देखो बेटा और एक प्रॉब्लम पूछा है 2024 में the heat absorbed by the system in the going through the given cyclic process is called how much cyclic process में क्या हो जाता है बेटा internal energy du is equal to 0 हो जाता है the amount of heat given to the system is equal to dq is equal क्या हो जाता है बेटा du plus dw है और dq is equal क्या हो जाता है बेटा dw हो जाता है dw is equal to dq है सो इसमें क्या निकालना पड़ता है इससे क्या निकालना पड़ता है इसमें क्या निकालना पड़ता है वर्क डन और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना पड़ता है इसका वर्क डन निकालना पड़ता है और दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना बेटा 280 टू 10 to the power 3 पास करें राइट और दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा दिस आल्सो 280 into 10 to the power of -6 meter cube है therefore area of the cycle is given by work done therefore dw is क्या हो जाता है बेटा 5 by 4 into 280 into 10 to the power of 3 into 280 into 10 to the power of -6 हो जाता है बेटा 10 to the power of 3 4 5 10 to the power of -6 और 10 to the power of 1 है that is dw is equal to 5 by 4 into 28 into 10 to the power of -1 है 2 14 2 2 2 7 that is called pi value what I have 22 by 7 into और 2.8 लिख रहा हूँ 7 this cancel हो गया 22 into 2.8 is equal to 61.5 joules ठीक है बहुत आसान प्रॉब्लम है देखो बेटा और एक प्रॉब्लम देखो बेटा और 2024 में पूछे एडियाबैटिक प्रोसेस में पूछे बेटा the pressure of the given gas in the adiabatic is proportional to cube of the absolute temperature that is P is direct proportional to T cube
that is P into T power of minus 3 is equal to some constant है वो दिए constant cube of the absolute temperature हो गया. The ratio of the Cp by Cv of the gas, that means Cp by Cv को क्या बोलते हैं मैडम? गामा इज इक्वल कितने? गामा निकालना पड़ता है इधर. गामा कैसे निकलता है देखो. Adiabatic process, the process which obeys Pv to the power of gamma is equal to constant है बेटा. This is called an adiabatic process. But added from the ideal gas equation Pv is equal क्या हो जाता है बेटा? n0t है, ठीक है. V is equal to n0t by P हो जाता है. वो इसमें लागू क्या मिलता है? P into n0t upon P whole power of गामा इज इक्वल कांस्टेंट है, ठीक है. और P P into P power of minus गामा, P into P power of minus गामा into T power of gamma is equal to constant, remaining term constant level, that is equal to P power of 1 minus gamma into T power of gamma is equal to constant हो गया बेटा. T power of gamma by 1 minus gamma, P to T power of gamma by 1 minus gamma is equal to constant हो गया. This is equation number 2. Compare equation number 1 and 2. From equation 1 and 2 it is very clear that what is very clear beta, gamma by gamma minus 1 is equal to कितना हो जाता है? Gamma by 1 minus gamma is equal to minus 3 हो जाता है, ठीक है. Gamma is equal to minus 3 plus 3 gamma हो जाता है बेटा. इधर देखो minus 2 gamma is equal to minus 3, gamma is equal to 3 by 2 है. बहुत आसान प्रॉब्लम है बेटा. ऐसे करो प्रॉब्लम सोचना पड़ता. Cp by Cv देते, Cp by Cv देते कैसे करना क्या नहीं मानते. जब नहीं मानते Cp by Cv का रिलेशंस वो समय पे याद होना पड़ता है, राइट. तो ऐसा करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है. बोलो बोल के करना पड़ता. हमारा चैनल भी बोलो फिजिक्स के ना करो करो, ठीक है. और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वो भी 2024 में पूछी बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. Pv to the power of 3 by 2 is equal to some constant दिए बेटा. वो कंपेयर करो Pv to the power of gamma is equal to constant को कंपेयर करो बेटा. gamma is equal कितने मिलेगा बेटा? 3 by 2 मिलेगा, ठीक है. The work done when the gas taken from the state P1 V1 to P2 V2 T2 में कितने work has to be done. Adiabatic process में work done is equal कितने बेटा? W is equal to P1 V1 minus P2 V2 upon gamma is 1 है ना, PV is equal to n of delta T. That is W is equal to P1 V1 minus P2 V2 upon gamma value कितने बेटा? 3 by 2 minus 1 हो जाता है, ठीक है. That is W is equal to 2 into P1 V1 minus P2 V2. बहुत आसान प्रॉब्लम पूछे बेटा. बोलो ऐसा करो प्रॉब्लम हल करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करो, 4 मार्क्स लेके आगे क्वेश्चन पे चलो, ठीक है. देखो बेटा और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, जेई 2000 में पूछे, वो भी आसान प्रॉब्लम है. PV diagram of an diatomic ideal gas system going under a cyclic process. I showed in the figure. The work done during an adiabatic process CD का work done कितने निकालना पड़ता है? Gamma is equal to 1.4 दिए. Work done क्या हो जाता है बेटा? Work done from C to D निकालना पड़ता है. That is equal to PC VC minus PD VD upon gamma minus 1 हो जाता है बेटा. That is equal to PCVC कितने बेटे हैं? PCVC कितने? P is equal to 100, this is the 4, that is equal to 400 minus PDVD means 200 है, वो 3 है, that is equal to 600 upon gamma minus 1 means 1.4 minus 1 है, that is equal to minus 200 upon 0.400, that is equal to minus 2000 बटे 4 4 1
4500, that is WCD is equal to minus 500 joules. वो भी आसान प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है लिखो। और एक प्रॉब्लम पूछे बेटा इन 2021 एडवांस्ड क्वेश्चन है बट बहुत आसान है, देखो वो पीवी डायग्राम ऐसा दिए। An ideal gas undergoes 4 step cycles as shown in the figure. PV diagram below. During the cycle, heat is absorbed by the gas. In which process में heat absorb करते हैं वो भी आइडेंटिफाई करना चाहिए अभी। जब देखो बेटा PV डायग्राम में इधर ये भी सी फर्स्ट प्रोसेस में देखो, दिस फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस in first process में देखो बेटा this is what is that one is perpendicular to P is equal to constant, that is for V change हो रहा है, इधर से इधर तक V change हो रहा है, V is increase हो रहा है, that means V is increase, that is T also increase, T increase हो जाता है तो क्या हो जाता है बेटा इंटरनल एनर्जी du also increase हो जाता है, डेल्टा U also increase हो जाता है। इन दिस केस डेल्टा U increase हो जाता है, V increase हो जाता है तो dW डेल्टा W also increase हो जाता है, डेल्टा W increase हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W है, तो दोनों पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, फाइनल वैल्यू पॉजिटिव मिलते हैं। इधर द हीट ऑब्जर्व्ड बाय द गैस, in this process heat is absorption हो जाता है बेटा, heat is absorbed by the gas, इसमें absorption हो जाता है फर्स्ट प्रोसेस में। और सेकंड प्रोसेस में देखो व्हाट इज सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस में V कांस्टेंट है, इधर देखो V कांस्टेंट है। इन सेकंड प्रोसेस में V भी कांस्टेंट है but P change हो रहा है, P is changes, that means it is decrease from higher value to lower value, P is decrease हो गया, T also decrease हो जाता है, ठीक है, T decrease हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी du also decrease हो जाता है, V constant है बेटा, therefore dq is equal to du plus dw, dw जीरो हो जाता है, वो भी जीरो है, that is for dq is equal to du decrease हो जाता है, that is equal to नेगेटिव है बेटा। इधर हीट रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट नॉट ऑब्जर्वेशन हो जाता है वो सेकंड वन प्रोसेस में। नेक्स्ट थर्ड वन प्रोसेस में देखो बेटा, थर्ड वन प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो थर्ड वन प्रोसेस में वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, volume is decrease, that means dw is equal क्या हो जाता है बेटा नेगेटिव हो जाता है, इधर dw is equal to नेगेटिव हो जाता है, that means P is equal to constant, here T is also decreases, that means du also decrease, dq is also decrease, इसमें that is equal to नेगेटिव हो जाते हैं, वो क्या करते हैं रिजेक्ट से, इसमें रिजेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस में देखो, फोर्थ प्रोसेस में V इक्वल कांस्टेंट है, इन द फोर्थ प्रोसेस क्या हो गया बेटा V इक्वल कांस्टेंट है, P इंक्रीज हो रहा है, T आल्सो इंक्रीज हो जाता है, ओके, T इंक्रीज हो जाता है तो इंटरनल du भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंटरनल du इंक्रीज हो जाता है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड Tu इज इक्वल टू du प्लस dw, वो भी पॉजिटिव हो जाता है बेटा। इन दिस केस में हीट ऑब्जर्प्शन हो जाता है, दैट मीन्स प्रोसेस वन में ऑब्जर्प्शन हो जाता है और प्रोसेस 4 ऑब्जर्प्शन हो जाता है। बहुत आसान प्रॉब्लम है बेटा, और 2021 में कुछ बोलो ऐसा सोच के प्रॉब्लम करना पड़ता है, प्रॉब्लम करने के बाद एक बार चेक करना पड़ता है और एक बार चेक करना पड़ता है, ठीक है, हर एक चेक कर, ठीक है बेटा, ठीक है।